Good morning, everybody. गुड मॉर्निंग. मैंने बोला कि पढ़ाई से डरना नहीं है, पढ़ाई से भागना नहीं है. जिस पढ़ाई से आप डरते हो वही पढ़ाई आपको जीवन में आगे पूरे जीवन में काम आने वाली है, और उसी पढ़ाई से आपका जीवन सुगम और सफल बनने वाला है. अगर आपको अपना भविष्य अच्छा चाहिए तो आज आपको पढ़ना पड़ेगा, आज आपको मेहनत करना पड़ेगा. ठीक है, खूब मन लगाकर पढ़ें. पढ़ाई करते समय आपको एक अलग स्वर्ग की अनुभूति होगी. अगर मन लगाकर पढ़ेंगे तो पढ़ाई करते समय आपको एक अलग स्वर्ग की अनुभूति होगी, और वही असली जीवन है. तो पढ़ाई में खूब आप इंटरेस्ट लीजिए. टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन योर स्टडीज. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक योर लाइफ सक्सेसफुल एंड स्मूथ. Someone is writing, I realized that when I opened my eyes in the morning, the first thing came to my mind was Order 8 and all the rules that we have studied. And while doing all the course, I was all the way just revising everything. It has finally become a habit now. Thank you. God bless you. That is what I want from you. That engrossment that I keep talking about, the positivity and the engrossment that I keep talking about, that is what I want from you. ठीक है. Okay, so in the last class we had completed subsequent pleadings, and now we have to start with the concept of set off. Order 8, rule 6, that is the concept of set off. Fine. So let us start discussing that. But before starting with the topic, let me tell you something. Suppose A has got a cause of action against B. So on that cause of action, A can file a suit. And suppose B also has a cause of action against A. Now on that cause of action, B also can file the suit. Means A has the legal right to file the suit. B also has the legal right to file the suit. A को भी legal right है suit file करने का, और B को भी legal right है suit file करने का. Is that fine? A has the right to file the suit, and B also has the right to file the suit. Fine? Now if A files a suit against B, so upon summons, A will have to file his written statement. Summons पे A को अपना written statement file करना पड़ेगा. And similarly, B can separately and independently on his cause of action, he can file a suit against A, and on that, A will have to file the written statement. Now, is it possible, the issue is it possible that A files the suit against B, B files the written statement, and on that written statement, in that written statement, B files his claim for that particular cause of action, कि B भी अपना वो claim जो भी cause of action था वो उसी सूट में अपने written statement में claim कर ले. Is it possible?
Now you see, you have got that concept of counter claim. You have the concept of counter claim. Now, as far as counter claim is concerned, in a suit filed by A against B, B can counter claim any of his causes of action, the relief on any of his causes of action. That is what B can do. But as far as set off is concerned, in set off also it is allowed, but set off is a bit restricted. There, A should file a suit for claim of money. Now, in such a suit where A has filed a suit for claim of money, and that claim can be either liquidated amount or unliquidated amount, means that can be a fixed amount or it may not be a fixed amount. The court has to decide the amount. Okay. Similarly, B in his set off, he can claim, in set off B can claim only an ascertained, that is a liquidated amount, an amount which is fixed from before. So that is where B can claim his set off in the same suit in which A has filed a suit claiming money. तो A ने जो मनी के लिए सूट किया है उसी में B अपना सेट ऑफ क्लेम कर सकता है. Is that fine? So that is what is called set off. काउंटर क्लेम इज अ बिट ब्रॉडर. काउंटर क्लेम में आप कोई भी राइट क्लेम कर सकते हैं, एनी राइट, लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड अमाउंट ऑफ मनी और एनी अदर काउज ऑफ एक्शन. काउंटर क्लेम में आप कोई भी किसी भी काउज ऑफ एक्शन पे क्लेम कर सकते हैं, बट सेट ऑफ में इट हैज टू बी, इन सेट ऑफ इट हैज टू बी अ क्लेम फॉर what? In set off it has to be a claim for liquidated money. ठीक है. Someone is asking, good morning sir. Sir, I do CPC in VOD. In Order 7, Rule 14, Sub Rule 4, the words handed over to a witness merely to refresh his memory. Will that witness be only plaintiff's witness? Yes, you are correct. And the same words used in Orders 8, Rule 1A, Sub Rule 4B, will that witness be only defendant's witness? Yes, you are correct, Sanjeev. You are correct. क्योंकि रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी तो उस पार्टी का विटनेस ही करेगा ना. रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी विल बी डन बाय द विटनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी, नो, हु हैज कॉल्ड दैट विटनेस. तो यू आर करेक्ट. Shubham Bansal is asking, counter claim is species, sir, and set off is genus. I think, Shubham, it is opposite. क्योंकि काउंटर क्लेम इज ब्रॉडर, सेट ऑफ इज नैरोअर. तो मुझे लगता है काउंटर क्लेम विल बी द जीनस एंड सेट ऑफ विल बी द स्पीसी, बिकॉज सेट ऑफ में यू कैन क्लेम ओनली अ लिक्विडेटेड अमाउंट, वेर एज इन काउंटर क्लेम you can claim any amount or you can claim any other legal right on which you have a cause of action. So I think that is counterclaim is broader as compared to set off, because set off is limited only to a liquidated sum of money, ascertained sum of money. Is that fine? Someone is asking, sir, here ascertained amount of money means the amount which has already been decided by the court or fixed by the court, as the case may be. No, Mohit. The ascertained amount for set off that I am talking about, that may not be yet decided by the court, that may be prefixed, pre-decided. The amount may be prefixed or pre-decided between the parties as well. तो पार्टीज ने आपस में अमाउंट फिक्स कर रखा था, तो उसके लिए भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं. कोर्ट ने अगर किसी सूट में आपको डिक्री दी है किसी फिक्स्ड अमाउंट के लिए, उसके लिए भी आप सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं.
लेकिन कोर्ट वाले डिक्री का तो ये है ना कि उसमें तो एग्जीक्यूशन होगा ना नॉर्मली। कोर्ट वाले डिक्री का तो ये है कि टेक्निकली उसमें तो एग्जीक्यूशन होना चाहिए, तो उसको किसी सूट में एज अ काउज ऑफ एक्शन आप क्लेम नॉर्मली नहीं करोगे। बट अगर पार्टीज ने आपस में अमाउंट फिक्स कर रखा है, या फिर सपोज देयर वाज अ लोन गिवन बाय बी टू ए एंड द लोन अमाउंट इज फिक्स्ड, सो दैट इज एन असर्टेन्ड अमाउंट। फाइन, या अब देखिए, लेट अस फोकस अपॉन सेट ऑफ नाउ। एक बात और ध्यान रखना बिफोर वी शिफ्ट। ये जो काउज ऑफ एक्शन बी क्लेम कर रहा है, now we are presuming that A has filed his suit within prescribed period. We are presuming that A has filed his original suit within the prescribed period. A ने अपना ओरिजिनल सूट प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर फाइल किया है, ये तो हम प्रेज्यूम करके चल रहे हैं, otherwise that suit itself will get barred by limitation. Now, as far as B is concerned, B also has a cause of action against A. Now B can claim that in the form of a set off, provided that claim of B is in the form of liquidated amount, ascertained amount. Now that cause of action should also be within the limitation period. It should not be barred by the Limitation Act, and it should not be barred under any other law. So it should not be barred by res judicata, it should not be barred by order 2 rule 2, it should not be barred under any other law for that matter, it should not be barred by the law of limitation. Then only B can claim it. No, if the claim of B is barred already under some law, how can B claim it? So that is where you say that B's claim should be legally recoverable. Now when they say legally recoverable, so that means, when you say legally recoverable, that means it is not barred by any law. So it is not barred by order 2 rule 2, it is not barred by res judicata, it is not barred under any other law for the, for example, it should not be barred under order 22 rule 9. It should not be barred by the law of limitation or under any other law for that matter. So it should be legally recoverable by B, then only he can claim it. No, if it is barred by some law, then how can B raise that claim in the suit? Because he cannot. Now what you have to understand is, had B wanted, could he have filed an independent suit? Had B wanted, would B be allowed to file an independent suit? क्या B को आप independent suit file करने के लिए permit करोगे? So if the answer is yes, then he can claim that. Instead of filing a separate suit, he can claim it in the form of a set-off. But if you are not going to allow him in an independent suit because the suit is barred by limitation or some other law, then he cannot claim it as set-off also. Plus one more thing is required, that in this suit, ये जो suit है आपका, इस suit में और ये जो claim किया है set off, दोनों में parties का legal character, they should fill the same character. Now when you say they should fill the same character, means what? They should be acting in the same legal capacity. The legal capacity in which A is acting in this suit, he should have the same, or maybe it is a different capacity. The legal capacity, different capacity, I'll just explain that to you. A जिस legal capacity में claim कर रहा है, और B जिस legal capacity में defend कर रहा है, वही लीगल कैपेसिटी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए. दूसरे वाला जो क्लेम है सेट ऑफ क्लेम, उसमें वही लीगल कैपेसिटी. जैसे इन द फर्स्ट सूट ए इज द क्रेडिटर, this defendant is the debtor. In the set of claim, B is the creditor and A is the debtor. So अब यहाँ पे A का देखो आप, A की लीगल कैपेसिटी बदल गई. पहले वो क्रेडिटर था लेकिन अब वो डेटर हो गया,
और बी की लीगल कैपेसिटी भी बदल गई, पहले वो डेटर था वो क्रेडिटर हो गया, लेकिन लीगल कैपेसिटी दोनों का है तो सेम ही ना, क्रेडिटर एंड डेटर. ठीक है, द पोजीशंस हैव गॉट रिवर्स्ड, द पोजीशंस हैव गॉट रिवर्स्ड, but the ultimate capacity in the set of claim is as creditor and debtor, and the same was capacity in the original suit. So that is permissible, that is allowed. Is that fine with you? So one thing I told you that it should be a liquidated amount, a fixed amount. The first thing is that the original suit should be for money claim, liquidated or not non-liquidated. Second thing, that the set of claim should be for money only and it should be a fixed amount. Other thing I told you that in the set of claim, whatever has been claimed, that cause of action of set off, that should be legally recoverable. And fourth thing I told you that in both the claims, the parties should fill the same character. The positions may get reversed, but the character broadly should be the same. The legal capacity should be broadly the same. Okay. One more thing you have to keep in mind, the original suit is filed by A. Original suit in my example has been filed by A, and B is the defendant. Now B will file the written statement to the original suit, and in that written statement only he will make his set of claim. तो जहां तक set of claim का सवाल है, as far as set of claim is concerned, for set of claim B had the cause of action, no? So for set of claim, B will actually act as a plaintiff and A becomes the defendant for the set of claim. So B, when he files his set of claim, he will have to follow all the rules of order 6, that is the rules of pleadings plus order 7, because the set of claim is on the basis of his cause of action, and to the extent of set of claim, he will play the role of a plaintiff, and the original plaintiff A will have to file a reply to the set of claim, will have to file a written statement to the set of claim, and the original plaintiff, for the purpose of set of claim, will act as a defendant, and therefore he will have to fulfill the requirements of order 6 and order 8. Now I am explaining this in very brief right now. Once I start reading the Bare Act, so I will be repeating all these points in more details. Is that fine? ठीक. So these are some elements, some requirements. The original defendant who files the set of claim, he will be considered to be a plaintiff for the purpose of set of claim. For the purpose of written statement for the original suit, he will be the defendant and he will follow the requirements of order 8 and order 6. But as far as set of claim is concerned, he will be considered to be a plaintiff for that purpose, and he will have to fulfill the requirements of order 6 and order 7. But for the original suit, the reply that he is filing is a written statement and he is acting as a defendant. So there he has to follow the requirements of order 6 and order 8. Now when the set of claim is made, the original plaintiff will have to file a reply, that is, he will have to file a written statement to the set of claim. So there the original plaintiff is actually, in his reply to the set of claim, he is acting as a defendant, and he will have to fulfill the requirements of order 7, order 8 read with order 6. It is not order 7, it is order 8 read with order 6. ठीक. अब दोनों एक ही सूट में फाइल हो रहा है, द ओरिजिनल सूट बाय ए एंड द सेट ऑफ क्लेम बाय बी. So these two are two independent causes of action. The trial will be conducted simultaneously. दोनों claims का trial साथ साथ होगा and a single judgment will be passed. But in the single judgment, there will be two separate paragraphs for the cause of action of A and cause of action of B. And after adjustment of the amount, whatever amount is the balance in the favor of whomsoever,
that will be the final decree. तो एक्चुअल डिक्री ए के फेवर में भी होगा, बी के फेवर में भी होगा, लेकिन देयर विल बी अ फाइनल डिक्री इन विच द अमाउंट विल बी एडजस्टेड. सो डिक्री में लिखा जाएगा दैट ए गॉट 10 lakhs, बी गॉट 8 lakhs फॉर एग्जांपल, एंड द फाइनल डिक्री इज इन फेवर ऑफ ए फॉर 10 minus 8 is equal to 2 lakh rupees. That is how the set of claim has to be seen. Is that fine? समझ में आया? बताइए प्लीज. डिड यू अंडरस्टैंड? टेल मी प्लीज. I guess you have understood, and otherwise also I am going to repeat all this when I read the Bare Act, and I'll explain that all once again. Harshit Chaube is writing, sir, please a little bit slow. Yeah, I am being a bit fast in saying all this because I know that I have to re-explain all this when I read the Bare Act. ठीक है. Priyanka is writing, yes sir, means she has understood. Very good. Himani is writing, yes sir. Lalit Kumar, yes sir. Okay. So since you all have understood, but in any case I am going to repeat it in details. So what are the basic requirements? If I write it here, what are the basic requirements? First is original suit is for money claim, and that may be liquidated. Liquidated means fixed amount, or unliquidated. Unliquidated means where the amount has not been fixed from before, the court has to fix it. This is one requirement. The other requirement is that the set of claim should be for liquidated or ascertained amount. Liquidated or ascertained amount. The third is that the set of claim shall be legally recoverable. Means it should not be barred by any law. It should be legally recoverable. It should not be barred by any law. Fourth is what? Fourth one, set of claim. Third one is set of claim shall be legally recoverable. ठीक. और ये भी ध्यान रखना कि both of them should be money. Original suit and set of both of them should be money. Original suit can be for liquidated or unliquidated amount, and set of claim can be for liquidated or ascertained amount. It should be legally recoverable. So means what? It should not be barred by any. It should not be barred by any law. ये किसी लॉ द्वारा barred ना हो. Fourth one is they should, in both the suits or both the claims, in both claims, parties should have or should fill the same character. So that is what is called should have same legal capacities. That may be interchanged, but broadly the capacity should be the same. Same legal capacities. Then what else? एक और इसमें छोटा सा point है that the set of claim should not exceed
not to exceed pecuniary limits of the court. अब suppose the suit was filed by A against B in the court of suppose the suit was filed by A against B in the court of the civil judge, and the amount claimed by the original plaintiff is, say, 15 lakh rupees. Now the defendant B has a claim of 30 lakhs. So he claims it as a set off. He claims 30 lakh as a set off of the civil judge. Suppose it is a matter of Delhi. The civil judge has the pecuniary jurisdiction of 20 lakhs in Delhi. 20 लाख का ही होता है ना मेरे ख्याल से. I think it is 20 lakhs. District court up till 2 crores, more than 20 up till 2 crores, and beyond 2 crores it is the high court. The latest law that you have got in that. So the defendant is claiming 30 lakhs from B in the form of a set off, whereas original plaintiff from A, whereas the original plaintiff A has filed the claim for suit for 15 lakhs. तो ओरिजिनल क्लेम जो है वो तो 20 लाख के अंदर है, तो ही कैन फाइल इट बिफोर सिविल जज. बट टेल मी, इफ द डिफेंडेंट हैड वांटेड, कुड ही हैव फाइल्ड सूट ऑफ 30 lakhs इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज? क्या वो 30 लाख का सूट सिविल जज के कोर्ट में कर सकता था? आंसर इज नो, बिकॉज सिविल जज हैज मैक्सिमम कैपेसिटी, पेक्यूनरी कैपेसिटी ऑफ 20 lakhs. So means what? The set off claim in this case is exceeding the pecuniary limit. Set off claim इस केस में pecuniary limits को exceed कर रहा है, कोर्ट के pecuniary limits को. इसीलिए उसको आप set off में नहीं कर सकते, आप अलग से सूट फाइल करिए, और जिस कोर्ट का भी जुरिडिक्शन बनेगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बनेगा दिल्ली में, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करिए, जबकि ओरिजिनल प्लेंटिफ ने फाइल कर रखा है सिविल जज के पास. तो ये भी एक कंडीशन है दैट द सेट ऑफ क्लेम शुड नॉट एक्सीड द पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द कोर्ट. और ये भी एक कंडीशन है दैट बोथ क्लेम्स should be considered to be cross suits. Cross suit means what? On some matter I have filed a suit against you, and there is another suit filed by you on the same matter. जिस मैटर पे मैंने आप पे सूट फाइल किया है, उसी मैटर पे आपने मेरे खिलाफ सूट फाइल कर दिया. जिस मैटर पे मैंने आपके खिलाफ सूट फाइल किया है, उसी मैटर पे आपने मेरे खिलाफ सूट फाइल कर दिया. तो दोनों को क्लब टुगेदर करके सिंगल ट्रायल में ट्राई किया जाता है, और उसके बाद दोनों पे जजमेंट आएगा. जजमेंट सिंगल होगा, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग पैराग्राफ्स होंगे, और डिक्री में दोनों का मेंशन होगा, लेकिन फाइनल डिक्री एक के फेवर में होगा. दैट इज अ क्रॉस सूट. सो this set off claim, a suit in which set off claim has been made, it takes the shape of a cross suit. It takes the shape of a cross suit. And then I also told you that regarding the set off claim, the defendant will be considered to be the plaintiff. Regarding the set off claim, the defendant will be considered to be the plaintiff. ये भी मैं लिख देता हूं. सेट ऑफ क्लेम के लिए defendant is to be considered to be a plaintiff, and he will have to fulfill the requirements of Order 6 read with Order 7. Because he is acting as a plaintiff. अब सेट ऑफ क्लेम का फॉर्मेट क्या होगा?
I will tell you. और एक बात और, for set off, since it is an independent cause of action, in a set off, what the defendant is claiming is an independent cause of action. So set off claim के लिए you must appreciate, set off claim के लिए the defendant, the original defendant will have to file the court fees. ऐसा नहीं है कि आप सेट ऑफ क्लेम वैसे ही फाइल कर लो, आपका इंडिपेंडेंट कॉज ऑफ एक्शन है, द सेट ऑफ क्लेम is an independent cause of action, so it is not that you can just claim it like that without any, it is not that you can just claim it like that without any without any court fees. You will have to deposit the court fees. आपको court fees deposit करना पड़ेगा. Is that fine? You will have to deposit the court fees. तो ओरिजिनल सूट के लिए ओरिजिनल प्लेंटिफ ने कोर्ट फीस दिया होगा, और सेट ऑफ क्लेम के लिए द ओरिजिनल डिफेंडेंट हु विल बी एक्टिंग एज अ प्लेंटिफ फॉर द सेट ऑफ, ही विल फाइल द कोर्ट फीस. सिंपल सी बात है ना. हैड द डिफेंडेंट फॉर हिज काउज ऑफ एक्शन फाइल्ड एन इंडिपेंडेंट सूट, तो वुड ही बी रिक्वायर्ड टू फाइल द कोर्ट फीस. अगर डिफेंडेंट ने अपने काउज ऑफ एक्शन के लिए इंडिपेंडेंट सूट फाइल किया होता, तो क्या उसको कोर्ट फीस डिपॉजिट करना पड़ता? तो आंसर इज यस. और अगर उसको कोर्ट फीस डिपॉजिट करना पड़ता, तो फिर सेट ऑफ क्लेम में आप उस कोर्ट फीस के रिक्वायरमेंट को बाईपास नहीं कर सकते. यू कैन नॉट बाईपास द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट कोर्ट फीस, एंड देयरफॉर सेट ऑफ क्लेम के लिए आपको कोर्ट फीस रिक्वायर्ड होगा. Is that fine? You cannot say कि ओरिजिनल सूट के साथ सेट ऑफ क्लेम का कोर्ट फीस एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं. दोनों इंडिपेंडेंट काउज ऑफ एक्शन हैं. ओरिजिनल सूट वाज फॉर एन इंडिपेंडेंट काउज ऑफ एक्शन बाय द प्लेंटिफ, and the set of claim is an independent cause of action by the defendant. So both of them have to be filed. Both of them have to be claimed. दोनों में cause of action अलग अलग है, तो दोनों में आपको कोर्ट फीस अलग अलग लगाना पड़ेगा. मोक्ष मेहता इज राइटिंग, सर कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द क्रॉस सूट पॉइंट. देखो क्रॉस सूट मोक्ष, आई विल टेल यू. Suppose you have a cause of action against me. Suppose you and me, we had a fight. God forbid, Moksha, God forbid, and touch wood. So suppose Moksha and me, we had a fight. Now Moksha and I had a fight. Now I hope you know that know something about the tort of battery, tort of assault, tort of battery. So Moksha he files a suit against me claiming damages for the tort of battery. And I also file a suit against him claiming damages for the tort of battery. Now here the amount is unliquidated right now. So obviously technically unliquidated amount के लिए आप set off तो नहीं कर सकते. फिर भी let's forget set off for the timing. I'm trying to explain what is a cross suit. So he filed a suit against me for the damages for tort of battery, and I also have independently, separately filed a suit for the damages for tort of battery. Now these two are related to the same subject matter, the same wrong, and both of us are having our independent rights to claim our relief. So here the court can club together both the suits, because these suits are what? You are making your claim on the same ground, and I am making my claim on the same ground. So it is what? It is called cross suit. Here the court will club together both the suits, will conduct the trial, record the evidences, and if there is a common witness, the court will record that witness's testimony only once. It is not that you present a witness and then I also present the same witness and his testimony will be taken twice. It is not like that. The joinder of trial का मतलब ही है कि आप
एक कॉमन विटनेस का एक ही बार एग्जामिनेशन करोगे. आफ्टर दैट अ सिंगल जजमेंट विल बी पास्ड, and in that single judgment the court will write two separate paragraphs. In one it will talk about your right, and in the other it will talk about my right, and finally the decree will be passed. Either your claim will be dismissed or my claim will be dismissed. One will be granted and the other will be dismissed, and accordingly the decree will be passed. Okay, so that is what is a cross suit. So when you have filed a suit against me, Moksh, when you have filed a suit against me claiming some amount, liquidated or unliquidated, and I have made a set-off claim in the same suit against you claiming some liquidated or ascertained amount, so these two will be considered to be cross suits. Abhi, they are not cross suits technically because I have not filed my separate suit, but still these two, an analogy can be drawn with cross suits, and therefore the same pattern will be followed as the court follows in the cross suits. Moksh, is it okay with you? समझ में आया? हर्षित चौबे लिख रहे हैं, respected sir, sorry, actually I write each and everything that you say, and that is why I have said. Yeah, Harshit, that is very good practice. If you could write everything that the teacher is saying, so that is a very good habit. That will, number one, prepare some good notes for you for future revision. Number two, it will give you some writing practice, and number three, it will enhance your speed also, and number four, it may cause some improvisation in your English language as well. ठीक, and most important is the revision part. Priyanka Rajak is writing, sir, can we add this point also, that here the original plaintiff will be considered as defendant and he has to file the written statement in reply to the set of claim? Yes, yes, yes. And for this have to fulfill the requirements of Order 6 rules and Rule 7 under the CPC. It is not Order 7. The original plaintiff will be acting as a defendant, no? तो थोड़ा सा करेक्शन कर लो प्रियंका. इट इज ऑर्डर 6 रेड विथ ऑर्डर 8. ऑर्डर 7 तो प्लेंट के लिए होता है ना, तो ऑर्डर 8 शायद गलती से तुमने टाइप कर दिया है, तो इट इज ऑर्डर 6 रेड विथ ऑर्डर 8. यस, वेरी करेक्ट. तो लेट अस, मेरे ख्याल से काफ़ी समझा दिया मैंने आपको. अब जब आप बेयर एक्ट पढ़ के समझोगे ना तो और क्लियरली समझ में आएगा. दिस वॉज जस्ट अ बैकग्राउंडर दैट आई वॉज गिविंग टू यू. दिस वॉज जस्ट a backgrounder that I was giving to you. ठीक है, अब आप बेयर एक्ट निकालिएगा प्लीज. ऑर्डर 8 रूल 6. आज क्या डेट है? व्हाट इज द डेट टुडे? मेरे ख्याल से आज 18 नहीं, आज 19 तारीख है. 19th of January 2023. Today is Thursday, no? आज सुबह मैं भजन सुन रहा था विष्णु भगवान की. Okay, it is 19th of January 2023. And it is a Thursday. Please take out Order 8 Rule 6. आपका पंजाब का एग्ज़ाम है ना? आई थिंक यूपी का भी प्रीलिम्स है आने वाला और पंजाब का भी एग्ज़ाम है. आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द डेट. 12 फरवरी को यूपी का है क्या? Is it 12th February? Is it the UP exam? And when is the Punjab exam? Can you tell me, any one of you? Wishing all the best to all of you
for the coming prelims and subsequent exams. I'm not sure, मैं आपसे पूछ रहा था, मैं अनाउंस नहीं कर रहा था. I was asking you for the date. Yeah, UP is for the 12th of February 2023. पंजाब का बताना, if anyone knows. 22 January, 22nd January is Punjab. So those of you who are taking the Punjab exam, wishing all the best to all of you, and just go and crack the paper. That is on the 22nd of January 2023. And those of you who are taking UP exam, or maybe both, and Punjab also, either both, just go and crack the paper. लास्ट के दिनों में ना, एग्ज़ाम के लास्ट के दिनों में, एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर मत लेना. डोंट टेक टू मच ऑफ मेंटल प्रेशर. प्रीलिम्स है ना, तो प्रीलिम्स में आपको रट के तो जाना नहीं है. यू हैव टू जस्ट बी familiar with the things, and you can go by the process of elimination. तो मोस्ट रॉन्ग आंसर को एक्सक्लूड करो, नेक्स्ट रॉन्ग आंसर, एंड दैट वेज out of the two close choices, go for your application of mind as to which one is the most appropriate. Someone is asking, Deepika Thakur. Deepika is asking, Deepika, are you from Himachal? Deepika? She is asking, what if defendant will not be able to claim set off? What if defendant will not be able to claim set off before first hearing? Is that he will have to go for order 6 rule 17 to seek court permission? Yes. अगर आपने रिटन स्टेटमेंट के साथ सेट ऑफ क्लेम नहीं किया है, उसके बाद आप सेट ऑफ क्लेम करना चाहते हो, तो फिर आपको कोर्ट से ऑर्डर 6 रूल 17 में परमिशन लेना पड़ेगा. ठीक. और एक बात और याद रखना, it is also essential that the cause of action for the set off claim should have arisen before the date of filing of the original suit. Cause of action for the set off claim should have arisen before the filing of the original suit. ठीक. सेट ऑफ क्लेम जब भी करोगे, इफ एनीवन हैज द लिमिटेशन एक्ट, सेट ऑफ क्लेम जब भी करोगे, इट विल बी रिलेटिंग बैक टू द ओरिजिनल डेट. इफ यू हैव द लिमिटेशन एक्ट, whenever you file the set off claim, it will be relating back to the original date. I think yes. Let me cross check. Limitation Act Section 3, subsection 2, clause B, part 1. Any claim by way of set off or counter claim shall be treated as a separate suit and shall be deemed to have been instituted in the case of a set off on the same date as the suit in which the set off is pleaded, and in the case of a counter claim on the date on which the counter claim is made in the court. ये लिमिटेशन एक्ट में आप पढ़ोगे, you will read that in लिमिटेशन एक्ट. ठीक है, तो ये मैं अभी आपको बता दूंगा. Deepika is from Himachal. That's great. And Deepika, which place in Himachal? Are you from Hamirpur? Deepika? देखो, सेट ऑफ का ये भी ध्यान रखना, मैं यहां बना देता हूं. एक और पॉइंट याद रखना, द कॉज ऑफ एक्शन फॉर सेट ऑफ क्लेम should have arisen before the date of before or at भी हो सकता है, of filing, before or at the date of filing original suit. और एक और बात, फॉर द पर्पसेस ऑफ लिमिटेशन एक्ट,
for the purposes of Limitation Act under section 3 clause B subsection B, section 3 का 1 भी तो होगा ना. Just a minute, give me a few seconds. Part 2, B का part 2. हाँ, section 3 clause 2 B part 1. यहाँ पे you must see that whenever, अच्छा Kangra, I've been visiting Kangra again and again several times. I always go to visit Kangra Valley, Palampur. I always go to Palampur, Deepika, and I worship at Bajeshwari Mandir, Kangra Devi Mandir, and फिर ज्वाला देवी मंदिर ऑल्सो. तो मैं वही चिंतपूर्णी माता, फिर ज्वाला देवी माता, फिर बज्रेश्वरी माता, फिर उधर चामुंडा देवी माता, सारे दर्शन के लिए जाता हूँ हर साल नहीं, आजकल तो नहीं जा पा रहा हूँ, कोविड टाइम में नहीं गया था, पहले हर साल जाता था. एनीवेज, लेट्स कम आउट ऑफ दैट. तो सेट ऑफ क्लेम आपने जब भी किया हो, it will relate back to date of original suit. इसका क्या मतलब हुआ? What is the implication? देखो, I'll just tell you. मान लो एक टाइमलाइन बनाते हैं हम. A has a cause of action against B on this date. A को cause of action इस डेट पे मिला, उसका prescribed period is this, and B got the cause of action on this date और उसका prescribed period यहाँ है. ध्यान से देखना डायग्राम. A got the cause of action on this date, date 1, and A's prescribed period is here, date number 3. B got the cause of action on date number 2, and the prescribed period for B's cause of action is date number 4. A filed the suit within his prescribed period. मान लो A ने इस डेट पे सूट कर दिया, ठीक. A filed the suit within the prescribed period. Summons etc. was sent, and somewhere here B files the WS, and in the WS only B files the set of claim. अब आप ध्यान से देखिए, जिस डेट को, डेट नंबर 5 को B ने अपना सेट ऑफ क्लेम किया है, ठीक है, जिस डेट को B ने अपना सेट ऑफ क्लेम किया है, उस डेट को आप देखिए B का प्रेस्क्राइब्ड पीरियड एक्सपायर हो गया है कि नहीं. टेल मी प्लीज, द डेट ऑन विच B हैज फाइल्ड हिज set of claim, that is date number 5, on that date is not the prescribed period of B on his cause of action expired. Yes? Yes? Tell me please. And if that is the case, so will B be allowed, if that is the case, will B be allowed to make the claim of set off? Will you not say that B का जो set off claim है, that will be barred by limitation and therefore he cannot make the claim? आप कहने को कह सकते हो, लेकिन what does the Limitation Act say? Limitation Act section 3 clause 2 B part 1 clearly says any claim by way of set off shall be treated as a separate suit and shall be deemed to have been instituted in the case of a set off on the same date
as the suit in which the set off is pleaded. तो जिस दिन जो ओरिजिनल सूट फाइल हुआ था, द डे व्हेन द ओरिजिनल सूट वाज फाइल्ड, it will be said that the set off claim was made on that original date. अब आप देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, सेट ऑफ क्लेम डेट नंबर 5 पे हुआ है. तो इफ यू गो बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ और इफ यू गो बाय द लिमिटेशन एक्ट, then when set off claim was filed, the prescribed period for B was expired. So therefore this set off claim should be barred by limitation and should not be allowed. But the Limitation Act, we have just read it. Limitation Act says that set off claim will be said to have been filed or made on the day when the original suit was filed. So it will relate back to the original date. So it will be deemed as if the set off claim was made on this date, and by this date, you see, the prescribed period had not expired, and therefore the set off claim will be allowed. Had it been counter claim, then it would have been barred. अगर ये counter claim होता, then it would have been barred, because regarding counter claim in section 3 clause 2 sub clause B, or say section 3 clause section 3 subsection 2 sub clause B 2 part 2, they are saying in the case of counter claim on the date on which the counter claim is made in the court, तो काउंटर क्लेम के लिए उस दिन माना जाएगा जिस दिन काउंटर क्लेम हुआ था. फॉर काउंटर क्लेम इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन फाइल्ड ऑन द डे व्हेन एक्चुअली द काउंटर क्लेम वाज मेड. तो अगर ये काउंटर क्लेम होता, हैड इट बीन अ काउंटर क्लेम, देन द क्लेम should be said to have been made on the day when it was made, and by that time the prescribed period was expired, and therefore the counter claim would have been barred and would not have been allowed. Is that fine? ठीक. So I guess things should be okay with you. अभी तक समझ में आ रहा है? आ रहा है. थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैं बेयर एक्ट पढ़ूंगा तो वहाँ पे फिर से एक बार डिस्कस करूँगा. लेकिन फर्स्ट राउंड में अगर 60-70% भी समझ में आ गया तो ठीक है, 60% भी आ गया समझ में तो ठीक है. अब सेकेंड राउंड बेयर एक्ट के साथ करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से 100% आ जाना चाहिए. प्रियंका यादव इज राइटिंग, सर कैन वी से दिस डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक? या regarding set off, the doctrine of relating back applies, but for counter claim it does not apply. ठीक. So I guess we can take a small break here, and after that we can continue. ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे. अदिति चौबे लिख रही है, सर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है. चंचल यादव लिख रही है, चंचल यादव तुम कहाँ थी, बहुत दिन बाद देखा है मैंने. Could you please explain the last point? ये लिमिटेशन वाला मैं अभी समझा देता हूँ. कोई लिख रहा है, सर कभी ऐसे पढ़ा नहीं. लिमिटेशन तो तुम लोग ज़्यादा पढ़े भी नहीं होगे शायद. आई एम नॉट श्योर कि आपके कॉलेज के सिलेबस में लिमिटेशन एक्ट था कि नहीं था. सुनील वाधवा लिख रहे हैं, सर खिचड़ी भी बन रही है दिमाग में, बट समझ आ रहा है. 60% तो बिल्कुल समझ में आ रहा है. बहुत अच्छी बात है. खिचड़ी तो बननी चाहिए ना. खिचड़ी बनाओगे तब तो उसको खाओगे. ललित कुमार लिख रहे हैं 100% समझ आ गया. वेरी गुड. सो सर, इफ द प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ बी एक्सपायर्ड बिफोर द फाइलिंग ऑफ द ओरिजिनल सूट, then the set off claim will not be allowed? Yes, it will not be allowed. Ankit Gupta is writing, so sir, if the prescribed period of B expired before the filing of the original suit, then set off claim will not be allowed? Not at all. It will not be allowed. Sir, the class is so beautifully explained. Probably you are teaching with lots of love. Yeah, my love is always there, no? It spills out in the form of teaching. Probably you are teaching with lots of love. Yeah, it is true. Love ही तो है जो spill out होता है in the form of teaching.
टीचर अगर आपको प्यार नहीं करेगा तो पढ़ाएगा क्या? ओके. Karamveer Singh is asking this question. I find this to be very important and interesting also. And Karamveer, that is very intelligent of you that you have asked this question. He is asking, if plaintiff withdraws his suit, then will defendant's suit be independent and continue? अगर plaintiff ने suit withdraw कर लिया तो क्या डिफेंडेंट का जो क्लेम है सेट ऑफ का वो इंडिपेंडेंटली चलेगा? अब देखो, काउंटर क्लेम में इसी बात पे एक जजमेंट भी है. व्हेन यू सी काउंटर क्लेम, उस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ. ऑन काउंटर क्लेम आई विल बी डिस्कसिंग दिस. देयर इज अ जजमेंट ऑन काउंटर क्लेम on the same point. I'll just see the judgment. There you have this particular point explained in one of the cases. ठीक है? So that I will be discussing with you when I come to counter claim. But otherwise, you see, otherwise you must see, इसमें है इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स भी हैं और अदरवाइज. अब सेट ऑफ क्लेम में देखो, सेट ऑफ क्लेम में क्या होता है कि प्लेंटिफ ने ओरिजिनल सूट फाइल किया और ही इज क्लेमिंग सम मनी, लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड. डिफेंडेंट ने अपने कॉज ऑफ एक्शन पे सेट ऑफ क्लेम कर दिया. प्लेंटिफ का मान लो 15 लाख का क्लेम है और डिफेंडेंट का 5 लाख का क्लेम है. तो डिफेंडेंट ने अपने कॉज ऑफ एक्शन पे 5 लाख का क्लेम कर दिया. दैट इज एन असर्टेन्ड अमाउंट. नाउ देयर आफ्टर द प्रोसीडिंग्स स्टार्ट, द ट्रायल ऑल्सो स्टार्ट्स, एंड इन द मीन टाइम द प्लेंटिफ फॉर सम रीजन अंडर ऑर्डर 23 रूल 3 he withdraws his, the plaintiff for some reason under order 23 rule 3, he withdraws his suit. तो अब द क्वेश्चन इज कि प्लेंटिफ ने अपना सूट विड्रॉ कर लिया तो फिर तो डिफेंडेंट का सूट अकेला हो गया ना. हिज क्लेम इज अलोन. सो विल यू कंटिन्यू विद द डिफेंडेंट्स क्लेम ऑफ 5 लाख रुपीज and decree that, or will you deem that also to be withdrawn? Now my answer to this would be that, you see, number one, defendant has an independent cause of action for 5 lakh rupees. Number two, he has filed the court fees also. Now the manner of claiming it is that he did not file an independent suit, rather he claimed it in the form of a set-off. But once he has claimed it, so for that set-off claim of 5 lakh rupees, he has initiated the proceedings and he has done all the formalities. What my point? उसने कोर्ट फीस भी फाइल किया, उसने प्लीडिंग्स ऑफ प्लेंट के सारे रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल किए. तो अब अगर प्लेंटिफ अपना ओरिजिनल सूट विड्रॉ कर भी लेता है, फिर भी डिफेंडेंट का जो सेट ऑफ क्लेम था दैट इज ऑन एन इंडिपेंडेंट कॉज ऑफ एक्शन, एंड आई डोंट थिंक that will also be deemed to be withdrawn or dismissed, etc. So I understand that the defendant's set of claim will still continue. Now since the plaintiff has withdrawn his original suit, so there will nothing like set off in that suit, because original suit में तो decree होगी नहीं, because that has been withdrawn. So set off जैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी the claim of the defendant will continue to be tried and the decree will be passed in that claim. ठीक है. Now then Abhishek is asking me, sir, suppose court fixes time to file WS after 30 days, 15 days more, but the defendant fails to file so, but here defendant proved the sufficient cause although court order was strict, then what will happen? No, if he has got sufficient cause, the court will further extend the time. उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं. Court will further extend the time. Saloni Sinha is writing, since set-off is a part of the original suit itself, which can be the foundation of the suit, so once the suit itself is withdrawn, the set-off
will not sustain itself. Defendant may file a separate suit or apply for transposition. नहीं 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 सलोनी नो ना डिफेंडेंट को दोबारा सूट क्यों फाइल करवाओगे तो दैट विल रिजल्ट इनटू डिले ऑफ प्रोसीडिंग्स नो ये भी तो देखो ना कि अगर डिफेंडेंट को कहते हो कि ओरिजिनल सूट विड्रॉ हो गया तो तुम अपना सूट फिर से फाइल करो तो एक तो बार ऑफ लिमिटेशन का चक्कर पड़ जाएगा उसमें दोबारा फाइल करवाओगे हो सकता है उस समय उसका प्रिस्क्राइब पीरियड एक्सपायर हो गया हो और दूसरा कि डिले इन प्रोसीडिंग्स नहीं हो जाएगा पहले वो क्लेम कर चुका है उसके प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गए हैं और अब आप उसको कह रहे हो कि दोबारा सूट फाइल करो तो डिले इन प्रोसीडिंग्स नहीं हो जाएगा तो unnecessary delay in the proceedings also will take place plus you will be pestering the defendant again to file a fresh suit so I don't think that is in line what you are saying I don't think what you are saying is in line with the policy of CPC और ट्रांसपोजिशन का तो मतलब ही नहीं बनता ना ट्रांसपोजिशन का तो मतलब ही नहीं बनता क्योंकि डिफेंडेंट ने जो क्लेम किया है सेट ऑफ का वो तो उसका इंडिपेंडेंट काउज ऑफ एक्शन है तो उसमें तो वो प्लेंटिफ की तरह एक्ट कर रहा है ना ही इज एक्टिंग एज अ प्लेंटिफ तो उसमें व्हाई शुड ही गेट हिमसेल्फ ट्रांसपोज्ड ही विल बी कॉल्ड द प्लेंटिफ एंड द ओरिजिनल प्लेंटिफ विल बी कॉल्ड द डिफेंडेंट सो प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट सो देयर इज नो नीड फॉर ट्रांसपोजिशन नो तो सलोनी इसमें मेरे ख्याल से आपका आंसर गलत हो गया एंड बाय द वे पटना का क्या हाल है हाउ इज पटना सलोनी तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई सलोनी आपका आंसर मुझे लगता है गलत हो गया तो आप एक बार चेक करिएगा इसको मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक तो ट्रांसपोजिशन का तो मतलब ही नहीं बनता और दूसरा फ्रेश सूट फाइल करवाओगे तो उसको दो बार पेस्टर कर रहे हो ना और फिर कोर्ट फीस का क्या होगा क्या उसी कोर्ट फीस पे फ्रेश सूट फाइल होगा या फिर दोबारा कोर्ट फीस लगाना पड़ेगा अगर आप दोबारा कोर्ट फीस लगवाते हो तब तो दैट विल बी अ ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस नो प्लेंटिफ के विड्रॉ करने की वजह से डिफेंडेंट को अपना क्लेम दोबारा फाइल करना पड़ रहा है और दोबारा कोर्ट फीस लगाना पड़ रहा है सो दैट इज अगेंस्ट जस्टिस नो policy of CPC will get defeated. She is saying it is too cold here in Patna. Yeah, I know. पटना में कहाँ रहते हो आप सलोनी अगली बार आऊँगा तो आपको बताऊँगा पटना में जितने भी लोग हैं सबको बताऊँगा फिर हम मिलेंगे कहीं ओके मैं हिमाचल भी आऊँगा तो मैं बताऊँगा आपको जो लोग हिमाचल के हैं फिर विल मीट अब एक बार मैं वो वाला पॉइंट दोबारा समझा रहा हूँ किसी ने बोला था दोबारा समझाने के लिए ये लिमिटेशन वाला पॉइंट दैट लिमिटेशन पॉइंट आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन इसको मैं इसके बाद दोबारा नहीं समझाऊंगा बिकॉज एज इट इज दिस विल बी डिस्कस्ड इन द लिमिटेशन क्लासेस and in the evening batch I am starting with limitation classes in the month of February एक महीने के अंदर मैं लिमिटेशन स्टार्ट करने वाला हूँ तो ठीक है तो वहाँ पे तो दोबारा पढ़ना ही है हमको हाँ चंडीगढ़ भी आऊँगा ओके देखो इसमें व्हाट आई सेड वाज Section 3 clause 2 Section 3 clause 2 subclause B 1 it clearly says that the set of claim irrespective of whenever you have claimed it will be deemed to have been claimed it will be deemed to have been claimed when on the date of original suit on date of original suit आपने जब मर्जी किया हो सेट ऑफ क्लेम ये ओरिजिनल सूट के डेट पे क्लेम माना जाएगा एक बार फिर मैं लिमिटेशन एक्ट पढ़ रहा हूं फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस एक्ट सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस एक्ट एंड देन क्लाउज बी any claim by way of set off
shall be treated as a separate suit and shall be deemed to have been instituted, number 1, in case of set-off on the same date as the suit in which the set-off is pleaded. So deemed to have been instituted लिखा है ना, deemed to have been instituted. अब मैंने claim लिख दिया but Bare Act में instituted लिखा है, one and the same thing. अब wherever you see, I have already taught you, wherever they say deemed to have been instituted, so जहाँ भी deemed शब्द का इस्तेमाल हो गया, that is what? That is a legal fiction. Means you actually it was not instituted on the original date. Actually, it was not instituted on the original date, but by way of legal fiction. But by way of legal fiction, ठीक, by way of legal fiction, we are deeming it to have been filed on the original date. तो सवाल है कि ये डीमिंग टू बी फाइल ऑन द ओरिजिनल डेट ऑफ ओरिजिनल सूट, इसका बेनिफिट क्या है, हम क्यों डीम करते हैं, ये सवाल है. तो उसको मैं समझाने के लिए एक बार फिर से वही डायग्राम बना रहा हूं. दिस इज द डेट ऑफ काउज ऑफ एक्शन ऑफ ए and this is the prescribed period of A. Means he can file the suit till the prescribed period. This is the cause of action of B and say this is the prescribed period of B. On this date somewhere, सूट वॉज फाइल्ड बाय ए. इस डेट पे सूट ने ए ने सूट कर दिया, तो ऑब्वियसली अपने प्रिस्क्राइब पीरियड के एक्सपायरी के पहले किया है, तो दैट इज वैलिड, दैट इज अलाउड. नाउ द सूट कंटिन्यूज, समन्स इज सेंट एंड समवेयर हियर बी फाइल्स हिज रिटन स्टेटमेंट एंड इन द रिटन स्टेटमेंट ही फाइल्स हिज सेट ऑफ. उस रिटन स्टेटमेंट में उसने इस डेट पे सेट ऑफ क्लेम किया. अब अगर आप कहते हैं, if you say that the set-off claim will be said to have been filed on the day when the set-off claim will be said to have been filed on the day when the set-off claim was actually filed, तो means what? ये जो डेट है, ध्यान देना डायग्राम को, ये जो डेट है माना जाएगा, उस केस में ये माना जाता कि सेट ऑफ क्लेम इस डेट पे फाइल हुआ और उस डेट पे B का prescribed period expire हो चुका है. The prescribed period of B is expired and on that date you will deem that the set of on this date you will deem that the set of claim was filed, so set of claim will be barred by limitation. But the effect of the deeming effect that we have given, so it will be deemed that the set of claim was filed on the date when the original suit was filed. So means what? The set of claim will be deemed to have been filed on the date when the original suit was filed. So it will be deemed to have been filed on this date. It will be deemed to have been filed on this date, and since it is deemed to have been filed on this date, so means what? The bar of limitation will not apply upon this set of claim. So it is a beneficial provision. This provision is a beneficial provision and it gives benefit to the defendant as far as the matters of limitation is concerned with respect to his set of claim. अगर ये काउंटर क्लेम होता तो क्लाउज 2 में लिखा है कि काउंटर क्लेम विल बी डीम्ड टू हैव बीन फाइल्ड ऑन द डे व्हेन द काउंटर क्लेम वाज फाइल्ड. सो मींस व्हाट? द डे व्हेन द काउंटर क्लेम वाज एक्चुअली फाइल्ड, that will be the day of filing of the counter claim, and therefore that benefit as you are giving in set off, that benefit you would not have given in the case of counter claim. And that is a matter of policy of law. Is that fine? Is that fine? So effect of that deeming is that even if the set off claim is expired due to the bar of limitation, still since it is deemed to have been filed on the date when the original suit was filed, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट हो रहा है ना, दोनों के अमाउंट्स का एडजस्टमेंट हो रहा है, शायद इसलिए हम इसमें यह बेनिफिशियल प्रोविजन दे रहे हैं. काउंटर क्लेम में कुछ और होता है, उसमें और भी काउज ऑफ एक्शन और भी राइट्स हो सकते हैं.
तो इसीलिए शायद उसमें हम ये बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। इसमें तो आप मैक्सिमम एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट कर रहे हैं ना, सो टू दैट एक्सटेंट दे आर गिविंग द बेनिफिट इन सेट ऑफ क्लेम. Is that understood? So I guess I have explained this once again. अब आप चले आइए बेयर एक्ट पे. Let's look at the Bear Act. So now we have to look at Order 8 Rule 6 and that talks about set off. और काउंटर क्लेम कहाँ पे है? काउंटर क्लेम इज ऑर्डर 8 रूल 6A से लेकर आई थिंक इट इज अप टिल G. And then rule 7 भी है उससे related. I think it is up till G. Yeah, rule G, 6G. And then you have got rule 7 also. This is counterclaim. तो ये तो हम बाद में करेंगे, पहले हम सेट ऑफ कर रहे हैं. और सेट ऑफ में भी ध्यान रखना, सेट ऑफ में भी ध्यान रखना. What we are talking right now is legal set off. Set off दो तरह के होते हैं. ये Order 8 Rule 6 is related to legal set off, and then you also have the concept of equitable set off. Now, equitable set off का concept has been taken from the British equity courts. British equity courts. So that I will be discussing after I complete legal set off. उसके लिए ऑर्डर 20 रूल 19 में कुछ मेंशन है, तो वो हम रिलेट करेंगे लेटर ऑन. दैट इक्विटेबल सेट ऑफ इज मेंशन समवेयर इनडायरेक्टली इन ऑर्डर 20 रूल 19. सो दैट आई रूल 19 सब रूल 3. सो दैट आई विल डिस्कस व्हेन आई कम टू दैट टॉपिक. तो लेट अस रीड द बेयर एक्ट. आज तो टाइम नहीं है ज़्यादा, बट लेट्स सी. पहला क्लाउज पढ़ लेते हैं. ऑर्डर 8 रूल 6 सब रूल 1. ऑर्डर 8 रूल 6 सब रूल 1. वेयर इन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी द डिफेंडेंट क्लेम्स टू सेट ऑफ against the plaintiff's demand any ascertained sum of money legally recoverable by him from the plaintiff, not exceeding the pecuniary limits of the jurisdiction of the court, and both parties fill the same character as they fill in the plaintiff's suit, the defendant may at the first hearing of the suit, but not afterwards, unless permitted by the court. Means he can do that afterwards also, but only with परमिशन. सो ऑर्डर 6 रूल 17 का बाद में अगर करना चाहते हो तो ऑर्डर 6 रूल 17 का एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा. एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट बट नॉट आफ्टरवर्ड्स अनलेस परमिटेड बाय द कोर्ट, प्रेजेंट अ रिटन स्टेटमेंट कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द डेट sought to be set off. Now this is what we have to read 2-3 times and we have to understand. अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो फिर से वही बातें बता रहा हूँ, ध्यान देना. वेयर इन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, तो ओरिजिनल जो सूट है, जो ओरिजिनल सूट है, दैट इज फॉर रिकवरी ऑफ मनी. अब दे आर नॉट राइटिंग एनीवेयर दैट इट शुड बी रिकवरी ऑफ लिक्विडेटेड मनी और अनलिक्विडेटेड मनी. लिक्विडेटेड मीन्स व्हाट? जो अमाउंट पहले से फिक्स्ड है. अनलिक्विडेटेड मीन्स जो पहले से फिक्स नहीं है लेकिन कोर्ट उसको फिक्स करेगा. तो रिकवरी ऑफ मनी लिखा है, लेकिन दे आर नॉट राइटिंग वेदर इट इज फॉर लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड. They are writing where in a suit for recovery of money the defendant claims to set off against the plaintiff's demand any ascertained sum. So defendant's amount should be ascertained. But as far as plaintiff's amount is concerned, the word ascertained will not go with that. So it is simply a recovery for money suit, and therefore it can be liquidated or it can be unliquidated. Fine. Now the set off claim, they are very clearly writing the set off claim should be for ascertained amount. Now when they say ascertained, that means it should be liquidated amount. जब वो कहते हैं ascertained, इसका मतलब है it should be liquidated amount, जो पहले से fixed है amount.
सेट ऑफ क्लेम किस में करोगे, कहां पे करोगे, कौन करेगा? इट विल बी द डिफेंडेंट हु विल मेक द सेट ऑफ क्लेम एंड ही विल डू सो इन द रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट के साथ वो सेट ऑफ क्लेम करेगा। अब देखो, ओरिजिनल प्लेंट का जवाब जाएगा, द रिप्लाई टू द ओरिजिनल प्लेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ written statement, and in that written statement only the defendant is enabled to claim set off. So this provision is an enabling provision. It enables the defendant to claim set off in the same written statement which he is filing as a reply to the original suit. अब ये जो आपका सेट ऑफ क्लेम है ना ascertained amount का, this is what is the, technically this is what is the plaint of the defendant, and the defendant for that purpose will be called the plaintiff. जो सेट ऑफ क्लेम है, देखो जो ओरिजिनल प्लेंट था उसके जवाब में जो फाइल किया वो तो उसके लिए तो वो डिफेंडेंट ही माना जाएगा, लेकिन उसी WS के साथ वो जो सेट ऑफ क्लेम करेगा उसके लिए वो plaintiff बन जाएगा, and he will have to fulfill the set off के लिए he will have to fulfill the requirements of order 6 and order 7. Then further they are saying that the set off claim shall be legally recoverable, means it should not be barred by any law. जो set off claim आप कर रहे हो वो किसी लॉ से बार्ड नहीं होना चाहिए, प्लस अमाउंट, सेट ऑफ क्लेम का जो अमाउंट है दैट शुड नॉट एक्सीड द पेक्यूनरी लिमिट्स। तो अमाउंट जो है जिस कोर्ट में ओरिजिनल सूट फाइल हुआ है उसके पेक्यूनरी लिमिट्स में होना चाहिए। प्लस दे आर सेइंग दैट द पार्टी शुड फिल द सेम कैरेक्टर इन बोथ द क्लेम्स। दोनों क्लेम्स में पार्टी को सेम कैरेक्टर फिल करना चाहिए, मीन्स दे शुड हैव द सेम लीगल कैपेसिटी। क्या? एज द फिल इन द प्लेंटिव सूट। प्लेंटिव के सूट में जो लीगल कैरेक्टर है वही डिफेंडेंट के सेट ऑफ क्लेम में भी होना चाहिए। ठीक। सो दे आर सेइंग प्रेजेंट अ रिटन स्टेटमेंट कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द डेट सॉट टू बी सेट ऑफ। सो जो ओरिजिनल रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा इन रिप्लाई टू द ओरिजिनल प्लेंट, उसी ओरिजिनल रिटन स्टेटमेंट में वो सेट ऑफ क्लेम करेगा। ठीक है, सो दैट्स इट। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट क्लाउज होगा, और फर्स्ट क्लाउज पे भी एक बार और डिस्कस करेंगे अभी। अब इसके बाद सेकेंड क्लाउज एंड देन द थर्ड क्लाउज एंड देन वी हैव द इलस्ट्रेशंस। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम हैविंग रेड all these sub rules. Clause means sub rule here. Please come having read all the sub rules plus the four in fact four first A, B, C, D, E, F, G and then all these illustrations, illustration A till illustration H. थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा और दिमाग लगा कर आइएगा अच्छे से। एंड उसके बाद ऑर्डर 8 रूल 6A उसको भी पढ़ कर आइएगा प्लीज, बिकॉज आफ्टर डूइंग दिस आई विल टेक यू इनटू लीगल इक्विटेबल सेट ऑफ एंड आफ्टर दैट आई विल टेक यू इनटू काउंटर क्लेम. So I hope you have broadly understood whatever I was discussing today. ये एलिमेंट्स याद रखना प्लीज, प्लीज रिमेंबर दीज एलिमेंट्स. तो यही तो आपको शुरू में बताया था ना मैंने. Ascertained, liquidated or unliquidated amount in the original suit, ascertained amount in the set of claim, legally recoverable, amount should be within the pecuniary limits of the court in which the original suit has been filed, and the parties should, in both the claims, should fill the same character. Same character means same legal capacity. And if you remember, with res judicata, I have already taught you what is meant by same legal capacity. ठीक है.
So please take care of yourselves, and God bless you. Take care, and please study these rules properly. ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं, लेट्स मीट आफ्टर अ वाइल. ठीक है, एंजॉय योर स्टडीज.